Hi guys, welcome back to the Nifty City channel. Now, as you know, every Sunday हम Nifty, Bank Nifty का analysis करते हैं with exact levels and zones जो future chart पे हम draw करके देखेंगे. So let's have a look कि क्या हो रहा है. पहले एक broad overview लेते हैं spot chart पे, daily chart पे कि क्या हो रहा है market में. So दो तीन factors है हमारे पास जो बहुत obvious होके आ रहा है. एक तो रशिया यूक्रेन टेंशन है, तो देयर इज हाई वोलेटिलिटी इन द मार्केट, राइट. तो बीच मार्केट में रशिया से स्टेटमेंट आएगा कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉर, मार्केट चढ़ जाएगी. फिर यूक्रेन आएगा, बोलेगा वी आर अंडर प्रेशर, यूएस बोलेगा देयर इज गोइंग टू बी वॉर, फिर मार्केट गिरेगी. सो ऐसे पीरियड में हमको क्या करना है? वी डोंट हैव टू फोकस ऑन द न्यूज, वी प्योरली हैव टू फोकस ऑन कि हमको अपना चार्ट क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है. दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू फोकस ऑन, बिकॉज दैट न्यूज तो हमारे हाथ में है नहीं, राइट. एंड न्यूज के बेसिस पे ट्रेड करने लग गए तो लग जाएंगे, इन सिंपल वर्ड्स, राइट. सो coming to the charts, let's see what is happening on the chart. So this is Nifty का spot, as you guys can see. तो इसमें क्या हो रहा है? We have one trend line here and we have another trend line here. Okay. So the blue trend line is the more recent one. This one is the more recent action ka trend line. Right now we know SGX Nifty is negative 130 points, 17,150K around SGX Nifty. अभी फिलहाल बता रही है. Now we don't know how the market is going to open tomorrow. Is it going to be so negative? Anyways, we'll come to that. Now the main point of contention is that if this trend line breaks, जो मुझे लग रहा है will break, this trend line which has been holding on since a long time, अगर मैं आपको डेटा बताऊँ ये कहाँ से लिया हुआ है ट्रेंड लाइन, you can see this is right from 29th Jan 2021, more than a year, right. 22nd April को एक touch point है इधर, and then directly 15th Feb. So now if we break this zone, okay, so if I talk about level, it will be somewhere around 16,800. So 16,800 का zone अगर हमने break किया, then it is going to be a huge fall. The target आप आराम से ये crash में, I would call it a crash, ये crash में 16,162 का level आप पकड़ सकते हैं if this happens, right. So we will also look at the Opstra data and all that kind of stuff. So where this may not happen, right, we have to keep our view open for both sides. Again मैं आपको बोल रहा हूँ, don't keep a bias कि कल नेगेटिव 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 ही होने वाला, राइट. प्राइस को देखना, अपने दिमाग में एक फीलिंग सेट मत कर लेना कि यही होने वाला है मार्केट में. समथिंग एल्स मे हैपन, राइट. इफ देयर आर 100 पीपल एंड 99 पीपल आर फीलिंग कि मार्केट गिरने वाला है, तो शायद मार्केट ना गिरे. तो जो हमको प्राइस चार्ट बताएगा हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे. ऑल्सो रिमेंबर, in such a volatile market, you have to be very quick in taking an entry and booking your profit. Taking entry, booking your profit. अगर आपने अपना पोजीशन होल्ड करके रख दिया काफी टाइम तक, आपका प्रॉफिट से लॉस या लॉस से प्रॉफिट जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है. बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सी यूनिडायरेक्शनल मूव्स. 3 दिन हमारा मार्केट काइंड ऑफ साइलेंट रहा है लास्ट 3 days. सो दिस पॉइंट ऑफ टाइम, this is going to be we are expecting Monday to be very trending market day. अच्छा खासा movement expect कर रहे हैं even on Tuesday, Monday and Tuesday. So this will be a good money making opportunity, but we have to trade sensibly. Trend के साथ हमको जाना है, trend के against नहीं जाना. So this is Bank Nifty, exact levels and everything we will discuss. पहले overview Bank Nifty का देख लेते हैं. So Bank Nifty में the trend lines that are coming are not from such a deep position. It's more recent. So Bank Nifty below 37,000 will become negative, right. Below 37,000 तो will become negative. 36,383, that is 36,400 पकड़ लीजिए, will be the immediate support. Below that, like I said, निफ्टी पे 16,800 के नीचे इट्स गोइंग टू बी ब्लड बाथ. सिमिलरली बैंक निफ्टी में बिलो 36,400 इट इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ,
right? Minimum to minimum, you can expect 34,000 ka target. That is 2,600 points ka fall, which is going to be huge. So according to me, if you ask me, it can go both ways. देखो, war होगा नहीं होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, right? If we see in, sorry about that, misclick हो गया. So if we see the Opstra chart, right? Opstra पे क्या हो रहा है? So this is where 17,000 का data is huge. It is a very good support right now. So this 17,000 break होना will not be easy for the market. ऐसा नहीं है कि एकदम से unless there is a huge panic. तो अगर 17,000 का एरिया ब्रेक होता है तो आप समझ लीजिए 16,800 is going to be easily touched. 16,800 ब्रेक होता है, then we are going to see a massive downfall. फिर मेरे हिसाब से हमारा जो रिसेंट लो था 16,400 के आसपास वो होल्ड नहीं होगा, उसके नीचे भी चले जाएगा मार्केट. Now, similarly, the data, if we see for Bank Nifty has a great support, had a good put writing at 37,500 also, and had a good put writing at 37,000 also. So if we open gap down, I don't think 37,500 obviously hold hone wala hai. So 37,000 will be a crucial support. So 17,000 on Nifty and 37,500 on Bank Nifty, right? If 17,000 breaks, Nifty पे 16,800 easily दिखेगा. If 37,000 on Bank Nifty breaks, 36,400 easily दिखेगा. If those points break, then there will be a huge fall. ठीक है? तो till the time these levels don't break down, we will not go completely negative. There is a full उम्मीद of a bounce. ठीक है? मालूम पड़ा कि जैसे right now the news came कि फ्रांस के प्रेसिडेंट एंड रशिया के प्रेसिडेंट हैड अ मीटिंग, 105-minute कॉल. They have agreed for certain terms for ceasefire in East Ukraine. ऐसी कोई न्यूज आएगी जहां सीजफायर हो गया, वॉर नहीं हो रहा है, तो immediately the market will bounce. Okay, so आई एम नॉट सेइंग कि आप न्यूज के हिसाब से ट्रेड करो, बट जब चार्ट पे दिखेगा आपको कि बाउंस हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल से रिएक्ट हो रहा है, तो इमीडिएटली कीप योर आंखें एंड कान ओपन. ठीक है? नाउ कमिंग टू द लेवल्स, द एग्जैक्ट लेवल्स क्या ट्रेड करने हैं हमको. सो निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है ये, स्पॉट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, राइट? तो अभी निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में द फ्लिप इज 17,341 to 17,374. Now what is a flip? For all the new followers, flip is a level जिसके ऊपर हम पॉजिटिव बायस मेंटेन करेंगे, जिसके नीचे हम नेगेटिव बायस मेंटेन करेंगे. इट इज अ क्रिटिकल जोन इन द मार्केट. So 341 to 374 is the critical zone. The first support that we have is 242 to 276. उसके नीचे we had this double bottom zone here, that is 217, one level. उसके नीचे we have 17,129 to 147, जो ये crucial candle का भी high है, right? This zone 129 to 147, and then you have 17,033 to 17,064, जो OI data के हिसाब से this level should hold. Okay, it's a crucial level. Below that, if we fall, as I said, 16,800 on spot. So on future chart, this zone will be 16,862 to 16,888. Right? इसके नीचे तो obviously कल तो market देखेंगे नहीं हम. On the higher side, if by chance we go higher, then there is 17,419, and उसके ऊपर the major resistance zone is 474 to 495. Only and only if we cross 17,500 can we definitely say that the market is now on the bullish upside. Then we can see 800, 17,800, 18,000, etc. So below this, we can't say the market will be bullish. The market will be volatile. ऊपर नीचे, ठीक है? Or the market can definitely correct, crash, whatever you call it, right up till this zone, 16,862 to 16,888. उसके नीचे, if you want to mark one zone, this zone is 16,711 to 16,729. Right? So these are the levels on Nifty. Now, before going on to the Bank Nifty chart, exact levels, एक request है, please like, share and subscribe this video. There are a lot of people viewing the video who are not liking the video, not subscribing. एक button है, free है, please click कर दीजिए. In case you want to join our class, want to learn about the stock market, want to learn about how to draw these levels, etc., link
is in the description. Cosmo Feed app hai. Please go on to the link. Very minimal charge of $4.99 only, and you will get the entire pre-recorded classes ka list, which will really help you out in your trading. Okay, now moving on to the Bank Nifty chart. Bank Nifty mein the flip is 37,723 to 37,820. Okay, this is the flip major area. Support 37,251 to 37,338. This is the first support. Uske niche what do we have? Uske niche we have 36,541 to 36,634. फिर 36,402 का एक crucial level है, and then we have 36,000 to 36,069. इसके नीचे कल we are not expecting. If we move higher, we have 38,400 का एक level, and उसके ऊपर we have a major resistance of 38,681 to 38,735. Bank Nifty में bullish view only above 39,000, completely bullish. उसके पहले will be volatile, right? So these were the levels. Stock specific action के ऊपर I am not commenting right now. There are 2 stocks that we have shared with our premium members. I think one we have already shared, one we have done our homework on, which we'll be sharing tomorrow. Both are negative side stocks. So in case you want all these kind of information, then I would suggest you join the premium group. Till then, take care. Bye bye. All the best for tomorrow. Trade well, trade smartly.